Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the speed test between the iPhone 15 Pro Max and the iPhone 14 Pro Max. तो हमने इसका कैमरा कंपैरिजंस ऑब्वियसली ऑलरेडी कर लिए हैं और इसका कार्ड्स हम यहाँ पे डाल देंगे तो आप उसे देख सकते हैं. बट टुडे इज ऑल अबाउट चेकिंग देयर परफॉर्मेंस. तो जैसे आपको पता होगा कि 14 Pro Max जब लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था तो ऑब्वियसली इसका एप्पल का फ्लैगशिप ब्रांड था एंड ये 15 Pro Max जो भी नया लॉन्च हुआ है दैट्स नाउ द फ्लैगशिप ब्रांड. एंड ऑल्सो ये दोनों जब भी आते हैं तो दे कम विद द बेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड दैट एप्पल हैज टू ऑफर. नाउ दिस ईयर 15 Pro Max जो है वो आता है इनका बेस्ट सिलिकॉन जो है न्यू A17 Pro Bionic प्रोसेसर के साथ 3 नैनोमीटर चिप एंड ऑफ कोर्स ये 14 Pro Max जो है ये आता है विद द A16 Bionic प्रोसेसर. तो इन दोनों के बीच में क्या है, कैसा परफॉर्मेंस है, सो इन दिस वीडियो वील पुट दैट टू द टेस्ट एंड चेक दैट आउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So before we start with the speed test, let me just tell you कि ये दोनों phones जो हैं ये updated हैं with the latest OS and also इन दोनों में almost identical data है which is almost 95 to 96% of the same data. Now first let's look at the benchmarking test. तो हमने इसे obviously Antutu and Geekbench दोनों के साथ रन किया है. में जो 14 Pro Max था उसका जो स्पीड आया है वो है 14,47,052 एंड जो 15 Pro Max और उसका स्पीड आया 14,55,089. सो इन ऑर्डर टू चेक द स्पीड्स हमने दोनों ही फोन्स को वेराइटी ऑफ एप्स लाइक सोशल मीडिया एप्स, वीडियो एप्स एंड गेम्स के साथ लोड किया है एंड फाइनली वी विल एक्सपोर्ट अ 4K वीडियो फ्रॉम यूजिंग VN एडिटर. सो लेट्स पुट द टाइमर ऑन एंड फर्स्ट अप इज अ स्पीड टेस्ट. ये दोनों ही फोन सिमिलर स्पीड्स देते हैं व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेट एंड वी क्विकली मूव ऑन टू सोशल एप्स एंड वीडियो एप्स. अब ये दोनों ही फोन काफी अच्छा कर रहे हैं बट द 15 Pro Max is slightly ahead. Next comes slightly heavy apps like YouTube and Google Meet and Google Maps जो आपका काफी सारा data and also processing speed खाते हैं. We move on to the games and the first one is the Real Cricket 2022 and the 15 Pro Max is moved ahead of the 14 Pro Max but 14 Pro Max भी ज़्यादा पीछे नहीं है. Finally, let's export that reel that we spoke about. तो ये 4K 30 FPS पे हम ये export करेंगे using VN editor and 15 Pro Max अभी भी आगे चल रहा है and completes the first lap with a speed of 3 minutes exactly. Now on the other hand, the 14 Pro Max comes in with a time of 3 minutes 22 seconds. जो अब lap 2 में we run through all the apps again. Almost all the apps on both the phones are completely open and they both make a very light meal of this. अब 15 Pro Max आगे है already, so obviously उसके lead के वजह से ये continuously आगे ही चलता है and comes in with a final time of 4 minutes and 6 seconds to complete the overall. So between the two, obviously the 15 Pro Max is much faster with its new processor, which is the A17 Pro Bionic chip, is expected to be much faster with a good benchmarking test and also जो practical apps test है उसमें भी ये काफी आगे आता है with the 14 Pro Max. Now what I'm surprised with is actually the level of performance. See, it is natural कि कभी भी कोई एक नया फोन आता है then with a better processor उसका performance जो है वो काफी अच्छा हो जाता है. But a jump up from performance like this is what is surprising. And no wonder because of this. When actually the phone came, I was wondering why is it that Apple is calling this a A17 Pro chip. If you see, as compared to this 14 Pro Max jo tha, that had a A16 Bionic processor. But now when I see the level of performance, then they must have realized that this performance with a 3 nanometer chip is far, far better than what is on the 14 Pro Max. So that's why the 15 Pro Max obviously is faster and that's why they've added the Pro according to me in that chipset. So if you like this video then make sure that you like, share and subscribe to our channel. Bell notifications on कर दीजिएगा. बिना subscribe कीजिए please मत जाइएगा. It motivates us to do a lot more.